SJF and try-T, they can be either preemptive or they can be non-preemptive. So round robin is somewhat similar to first come first serve scheduling algorithm, but FCFS is always non-preemptive, but here the preemption is added to enable the system to switch between the processes. And here, as I have discussed initially in the concept of multitasking or time sharing, here each process gets a small unit of CPU time, which is known as time quantum, or it is also known as time slice, which is generally represented by Q. And generally the time quantum is in between 10 to 100 milliseconds. And after this time quantum expires or time slice expires, the process is preempted and added to the end of the ready queue. And the timer interrupts every quantum to schedule the next process. And the average waiting time under this round robin policy is very large. And this is the thing which we have to remember. If there are total n processes in the ready queue and the time quantum is q, then each process gets 1 by n of the CPU time in the chunks of at most q units at once, and none of the process will wait for more than n minus 1 into q time units. So if we have suppose 10 different processes in the ready queue which are waiting, and the time quantum is suppose 4, so the value of n here is 10 and the value of q here is 4. तो किसी भी प्रोसेस को इतने टाइम से ज्यादा तक वेट नहीं करना पड़ेगा, तो भाई लास्ट प्रोसेस की बारी कब आएगी 36 मिलीसेकंड्स के बाद. सो this is how this RR scheduling algorithm works. So no process waits more than n minus 1 into q. So 10 minus 1 is 9, 9 into 4 36. So जो लास्ट प्रोसेस भी होगा, जो 10th प्रोसेस भी होगा, उसे भी श्योरली पता होगा कि अगर टाइम क्वांटम 4 है, कोई भी प्रोसेस 4 मिलीसेकंड से ज्यादा सीपीयू पे एग्जीक्यूट नहीं होगा एक बार में, तो भी उसकी बारी 36 मिलीसेकंड्स के बाद डेफिनेटली आ जाएगी. दिस इज द लॉन्गेस्ट वेटिंग टाइम. सो 36 मिलीसेकंड से ज्यादा किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ दिस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क्स. And the performance of this algorithm depends heavily on the size of the time quantum. So time quantum हम कितना choose करते हैं या कितना है, उस पे RR की performance depend करती है. And अगर जो हमारा time quantum है वो बहुत बड़ा होगा, if Q is large, then ये सेम वर्क करेगा जस्ट लाइक FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. बट अगर हमारा क्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है, यानी कि जो सीपीयू को बार बार प्रोसेस को रेडी में भेजना, फिर रेडी से रनिंग में लेके आना, तो वो कंटेक्स्ट स्विचेस बहुत बढ़ जाएंगे, विच इज टोटली प्योरली ओवरहेड फॉर द सीपीयू. So this is how this algorithm works. So this is another example, the same example which we have did in the case of the FCFS. So here we have 3 different processes and their burst time is given. तो हमने FCFS में सीखा था कि फर्स्ट टाइम P1 आया रैम में, तो P1 को completely allocate हो गया. But here we have to apply round robin with time quantum equals to 4. That means कोई भी प्रोसेस एक बार में CPU के पास 4 मिलीसेकंड से ज्यादा के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा. And this is the difference between FCFS and round robin. FCFS is always non-preemptive. Once a process is allocated to CPU, it will completely execute it. But here in the case of round robin, the processes will be allocated to the CPU according to the time quantum. So I'm not just making its Gantt chart on the board. So I hope all of you will understand this concept. So as you can see, initially Gantt chart will start from 0. And as the time quantum is 4, so no process will execute for more than 4 milliseconds at a time at the CPU. So initially, first of all, P1 started, and the total time which it requires at CPU is 24 milliseconds. But just due to round robin scheduling algorithm, it will just execute from 0 to 4 milliseconds, and then preemption will occur, and CPU will send this process P1 back to the ready state, and it will pick the next process P2, and P2 requires only 3 milliseconds, so it will just complete its task and it will be executed. तो ये 4 से 7 पे ये finish हो जाएगा. Then it will pick the next process P3 from the ready state. Process P3 also requires only
3 milliseconds. So from 7 to 10 this P3 will execute. Now P2 and P3 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं. अब हमारे पास रैम में एक ही प्रोसेस बचा है, प्रोसेस P1, जिसके हमारे पास 20 मिलीसेकंड्स लेफ्ट हैं, लेकिन ये 20 मिलीसेकंड्स एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होंगे. तो पहले 10 से 14 चलेगा, फिर वापस जाएगा रेडी स्टेट से, फिर सीपीयू वापस इसको पिक करेगा, रेडी से रनिंग में लेके आएगा, देन नेक्स्ट 4, देन नेक्स्ट 4, देन नेक्स्ट 4 एंड देन नेक्स्ट 4. सो दिस इज हाउ दिस round robin scheduling algorithm works, because here the time quantum is 4. so एक टाइम पर CPU किसी भी प्रोसेस को 4 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं देगा. इवन हमारे पास सिर्फ P1 प्रोसेस ही रह गया था रैम में, लेकिन वो तब भी उसको वापस रेडी स्टेट में भेजेगा, रेडी से दोबारा पिक करेगा आफ्टर एवरी 4 मिलीसेकंड. सो दिस इज how this round robin algorithm works. And typically we have a higher average turnaround time as well as average waiting time. But the best thing about this round robin scheduling algorithm is that it is having the better response time. So as you know, in all other algorithms we never know कि process की बारी कब आएगी. Priority scheduling में हो सकता है कि अगर किसी process की priority बहुत low है या lowest है तो उसकी कभी भी बारी ना आए, उसे CPU ना मिले. And similarly if we talk about SJF algorithm, तो SJF algorithm में अगर किसी प्रोसेस का CPU बर्स्ट टाइम बहुत बड़ा है तो उसकी बारी बहुत बाद में आएगी. बट इफ यू टॉक अबाउट दिस राउंड रॉबिन, यहाँ पे टाइम क्वांटम फिक्स है, सभी प्रोसेसेस को इक्वल मान के सेम टाइम के लिए CPU एक ना एक बार जरूर मिलेगा. तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, इफ देयर आर n प्रोसेसेस एंड द टाइम क्वांटम इज q, तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा किसी प्रोसेस को n-1 into q टाइम यूनिट्स के लिए वेट करना पड़ेगा. तो रिस्पॉन्स टाइम बेटर हो जाएगा, हर प्रोसेस को रिस्पॉन्स मिलेगा एंड हर प्रोसेस को पता होगा कि डेफिनेटली इतने टाइम के बाद तो मेरे को CPU एलोकेट होगा ही होगा, मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. एंड Q should be large as compared to the context switch time, and generally Q जो है हमारा टाइम क्वांटम है. अगर हम रियल सिनेरियो की बात करें तो ये 10 मिलीसेकंड से 100 मिलीसेकंड्स के बीच में कुछ भी हो सकता है. एंड as I have discussed, the performance of this scheduling algorithm depends heavily on this time quantum, so it should be very carefully decided that what time quantum we have to make. Okay, so this is very interesting thing. As you can see here, if we have suppose one process which requires only 10 milliseconds, so this is the burst time of the process. so कोई भी एक process है तो हम just देख रहे हैं कि time quantum और context switching के बीच में क्या relation बनता है. so if we have one process whose burst time is 10 milliseconds, that means it requires 10 milliseconds on CPU to complete its execution. so if we choose different time quantum, तो अगर मैंने first time 12 टाइम क्वांटम रखा, देन 6 रखा, देन 1 रखा, तो कितने कंटेक्स्ट स्विचेस होंगे, सो दैट वी हैव टू सी. सो द वेरी फर्स्ट केस यू कैन सी, इफ वी हैव ओनली वन प्रोसेस ऑफ दिस 10 टाइम यूनिट्स एंड इफ द टाइम क्वांटम इज 12, सो एक बार में CPU एक टाइम में एक प्रोसेस को 12 मिलीसेकंड्स तक एग्जीक्यूट करेगा. लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है वो 12 से कम है, तो डेफिनेटली ये वाला प्रोसेस एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको कभी भी बीच में हमें प्रीएम्प्ट नहीं करना पड़ेगा. तो कंटेक्स्ट स्विचेस कितने हुए? 0. बट अगर हम बात करें कि प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम है 10 मिलीसेकंड्स, बट नाउ द टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस इज 6 मिलीसेकंड्स, तो अब क्या होगा, एक बार प्रोसेस 0 से 6 तक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये वापस रेडी स्टेट में जाएगा एंड देन जब इसकी दोबारा टर्न आएगी, देन जो इसका रिमेनिंग 4 मिलीसेकंड्स है ये तब एग्जीक्यूट करेगा. तो भाई कितने कंटेक्स्ट स्विच करने पड़े? 1. सो नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विचेस इज 1. दैट मींस एक बार ये रेडी स्टेट में जाके वापस आएगा. सो कितनी बार रेडी स्टेट में जा रहा है, दैट इज द कंटेक्स्ट स्विच. And similarly, if we talk about the same scenario, the process has the burst time of 10 milliseconds, but now the time quantum is only 1 millisecond. That means एक बार में CPU किसी प्रोसेस को सिर्फ 1 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये 0 से 1 चलेगा, फिर जब इसकी टर्न आएगी फिर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and so on. So in that case 9 different context switches will be there, which is purely an overhead for the CPU. It is a time wastage for the CPU and CPU cannot do
much task during the context switches. So the time quantum should be carefully chosen so as to have the minimum number of context switches. Okay, so this is another interesting example. As you can see, if we talk about the turnaround time versus this time quantum. तो अगर मैं देखता हूँ कि मैं time quantum, this is the given scenario. We have 4 different processes from P1 to P4 and this is their burst time. तो भाई इस सिनेरियो के हिसाब से अगर हम टाइम क्वांटम की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आता है वो 11 आता है. अगर हम टाइम क्वांटम 2 चूज करते हैं तो 11.5 हो जाता है. इफ वी चूज द टाइम क्वांटम एज 3 देन इट इज इवन लेस देन 11. सो यू कैन जस्ट सॉल्व taking this example and for different time quantum you will get these values. And at time quantum 5 it gives the highest average turnaround time, even more than 12. And if we talk about 6 and 7, now at 6 and 7 we get the least turnaround time which is 10.5. so हमने discuss किया था while discussing this CPU scheduling criteria that turnaround time must be minimum. तो टोटल टाइम जितना किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में लगता है वो कम से कम होना चाहिए. ये चीज हमने डिस्कस की थी. सो यू कैन सी जब हमारा टाइम क्वांटम यहाँ पे 6 and 7 है तब हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है. सो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है. यहाँ पे आप बर्स्ट टाइम को देखो और यहाँ पे आप इस ग्राफ को देखो. अगर मेरे पास 1 था टाइम क्वांटम तो 11 आ रहा था, 6 और 7 पे ये 10.5 दे रहा है. तो क्या होना चाहिए, किस अकॉर्डिंग हमें टाइम क्वांटम चूज करना चाहिए सो दैट वी विल गेट द लीस्ट टर्न अराउंड टाइम. इफ एनीवन वुड लाइक टू ट्राई, because turnaround time totally depends upon the size of the time quantum. हम time quantum कितना चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली हमारी एवरेज turnaround time वेरी कर रहा है. बट just try to analyze the things and just try to find out the relationship between वैल्यूज आपकी सेम है, 4 प्रोसेसेस हैं, उनका बर्स्ट टाइम भी सेम है. बट मैं हर अलग अलग केस में टाइम क्वांटम को चेंज कर रहा हूँ, 1 से लेके 7 तक डिफरेंट वेरिएशंस किए. एंड दिस इज these are the results which we are getting. It is highest when it is 5, it is lowest when it is 6 and 7. So anyone would like to answer anything, how this variation is actually occurring? Any student? Okay, so there isn't anything specific or anything fixed कि अगर मैं टाइम क्वांटम इंक्रीज कर देता हूँ तो हमेशा मेरा एवरेज टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज ही होगा, या अगर मैं टाइम क्वांटम कम कर देता हूँ तो टर्न अराउंड टाइम भी मेरा एज अकॉर्डिंग कम हो जाएगा. सो देयर इज नो फिक्स वेरिएशन, बट द ओवरऑल सिनेरियो इज दैट कि जितना भी एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा आता है वो इम्प्रूव हो सकता है, यानी कि मिनिमाइज हो सकता है अगर हमारा जो टाइम क्वांटम है वो कुछ इस तरह का हो अकॉर्डिंग टू द सीपीयू बर्स्ट टाइम दैट मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस हमारे एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएं, यानी कि कंटेक्स्ट स्विचिंग कम से कम हो. तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम 6 है और प्रोसेस P4 का बर्स्ट टाइम 7 है. नाउ अगर हम टाइम क्वांटम 6 चूज कर लेंगे तो हमारा प्रोसेस P1 भी एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोसेस P2 भी और प्रोसेस P3 भी. तो ये वाले तीनों प्रोसेसेस के केस में कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी. Once they are assigned the CPU, they will complete their task. Only P4 एक बार पहले 6 तक एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस जाएगा और फिर वापस आके अपना जो पेंडिंग 1 मिलीसेकंड है उसको कंप्लीट कर लेगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस टाइम क्वांटम 7, सो अगर मैं टाइम क्वांटम 7 रख देता हूँ सो ऑल दीज 4 प्रोसेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड इन वन टाइम ओनली. तो किसी भी प्रोसेस को प्रीएम्पशन प्रीएम्प्ट नहीं करना पड़ेगा, सारे के सारे प्रोसेसेस ही एक ही बार में जैसे सीपीयू मिलेगा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएंगे. लेकिन अगर हम बात करें टाइम क्वांटम 3 and 4 की तो भाई 3 and 4 में क्या होगा, प्रोसेस P1 पहले 3 चलेगा फिर वापस जाएगा, फिर प्रोसेस P2 पूरा चल जाएगा, प्रोसेस P3 भी पूरा चल जाएगा, बट देन P4 3 चलेगा वो वापस जाएगा, फिर P1 अगेन 3 चलेगा, देन P4 अगेन 3 चलेगा, इसका अभी भी एक पेंडिंग रह जाएगा. सो जो हम टाइम क्वांटम चूज करते हैं वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो मैक्सिमम प्रोसेसेस हैं हमारे
वो एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाए CPU पे, बार बार उसको प्रीएम्प्ट ना करना पड़े, बार बार रेडी स्टेट में ना भेजना पड़े। तो अगर हम कुछ इस तरह का टाइम क्वांटम चूज करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे कंटेक्स्ट स्विचेस हैं वो कम हो जाएंगे, और अगर कंटेक्स्ट स्विचेस कम होंगे तो ओवरऑल जो टर्न अराउंड टाइम है वो मिनिमाइज होता जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल स्टोरी फॉर टुडे, and we have 10-15 minutes left, so I'm just giving you this example. ये वाला क्वेश्चन जो आपको गिवन है P1 P2 P3 P4, जस्ट सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम 3, टाइम क्वांटम 3 के लिए इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करो एंड जस्ट कंफर्म जितना ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम जितना इसमें अप्रोक्सीमेटली दिखा रहा है उतना आता है। चलो, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फॉर टाइम क्वांटम 3 एंड जस्ट टेल मी द वैल्यूज ऑफ एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। सर हाँ बोलो। सर हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं टाइम क्वांटम सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? नहीं, आपको टाइम क्वांटम गिवन होगा हमेशा। ओके सर। हाँ, तो आपको गिवन होगा, आपको उसी अकॉर्डिंग गैंट चार्ट बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी वैल्यूज फिल होती जाएंगी। ठीक है? Okay, so all of you just try this thing. We have 4 processes, P1, P2, P3, P4. Their burst time is 6, 3, 1 and 7. And we are just taking any one example. So just solve it for time quantum equals to 3. And अगर time quantum 3 है तो कैसा गैंट चार्ट बनेगा, and उसके अकॉर्डिंग completion time, waiting time, turnaround time, and finally just let me know the final values of average turnaround time and average waiting time. Okay, Ayush and Vaibhav has also answered something related to this RR scheduling. Time quantum must be high in order to get the less average waiting time. Okay, Ayush, I have discussed this point that it is not always necessary that time quantum high होगा तो ही average waiting time less आएगा. It may vary, but the overall concept is that according to the given burst time हमारा टाइम क्वांटम कुछ ऐसा होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस हमारे एक ही सिनेरियो में कंप्लीट हो जाएं, वापस रेडी स्टेट में ना जाएं। And Vaibhav has also concluded most of the burst time should be shorter than the quantum. Yeah, this is the overall concept, but it totally depends upon the thing. So I'm also just drawing this scenario on the board. And all of you can just try this thing. Time quantum 3 लेना है, values मैंने आपको बता दी थी, P1, P2, P3, P4, and 6, 3, 1, 7 is the burst time. Okay, so I hope you can see the both. The burst time for P1 is 6, for P2 it is 3, for process P3 it is 1, and for process P4 it is 7. And suppose the time quantum given is 3, and we have to make a Gantt chart, and then we have to fill the completion time, turnaround time, and waiting time. So anyone would like to answer? What will be the average turnaround time and waiting time if we choose the time quantum 3?
Okay, I'm just waiting for next 2-3 minutes so that any one of you can solve it for all of us. Okay, so हमें I think turnaround time तो given है 11 से थोड़ा सा कम आएगा. If we choose time quantum equals to 3, तो कितना आएगा exactly वो बताओ जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, and average waiting time भी बताओ. Okay, so Ayush has solved it first very quickly. And according to Ayush, average turnaround time is 10.75 and average waiting time is 6.5. Okay, Prakhar has also solved. Okay, very nice, both of you. Let's see what answer we will get. So the major thing is we must know how to make the Gantt chart according to the time quantum 3. Ajay has also answered 10.75 and 6.5. Okay, so 1 or 2 more answers, then I will just solve it here. 10.75 and 6.5. Okay, very good, Akanksha and Manish. Okay, so I hope all of you are now very much clear with the concepts, how we have to make the Gantt chart, how we have to solve. Also, I'm just making it for you. So round robin is always preemptive and it is a kind of FCFS. So we'll always assume that the processes arise in this order. So we will talk about P1 first, then P2, then P3, then P4. And none of the process can be executed for more than 3 milliseconds at a time. So first of all, P1 chalega from 0 to 3. Then P2 execute होगा from 3 to 6. तो P2 को total 3 ही चाहिए थे. P2 हमारा complete हो चुका है, अपना task complete कर चुका है. Then P3 का turn, P3 को सिर्फ 1 ही मिलीसेकंड चाहिए. So from 6 to 7 ये भी अपना task complete कर चुका है, ये भी बाहर चला जाएगा. Then P4 का turn आएगा. P4 will be executed for next 3 milliseconds from 7 to 10. P1 का 6 में से 3 चल चुका है, 3 ही pending है. So for next 3 milliseconds from 10 to 13, P1 will be executed and it will also be out of the RAM. And then we have P4. P4 के अभी 4 milliseconds बाकी है, लेकिन ये एक बार में 3 से ज़्यादा नहीं चल सकता, तो 13 to 16. Then इसका एक ही pending रह जाएगा. So it will be from 16 to 17. So 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, 17. So here we are also getting 17. So this will be the Gantt chart. And if I talk about the completion time, P1 को एक बार यहाँ मिला था CPU, फिर यहाँ पे मिला तब जाके वो complete हुआ था. So completion time for process P1 is 13, I think. तो भैया अगर कहीं मैं गलत होता हूँ तो you just correct me. The completion time of P2 is 6, completion time of P3 is 7, and the completion time of process P4 is 17. And if we talk about turnaround time, so यहाँ पे arrival time नहीं है, so we will assume all 0, and the turnaround time will be exactly same as the completion time. So 13, 6, 7, and 17. And waiting time is turnaround time minus close time. So 13 minus 6, it will be 7. 6 minus 3 will be 3. 7 minus 1, it will be 6. And 17 minus 7, it will be 10. So average turnaround time, it will be 13 plus 7, 20, 26 plus 17 will be 43 by 4. ठीक है, 43 by 4. 20 and 26 by 4. Okay, just confirm. 43 by 4. Yes, it is 10.5 or 10.75. So it will be 10, then we will have 30, so 7, 28, and then it will be 10.75. And it will be 6, then 2, 5, 6.5 milliseconds. So 10.75 milliseconds will be the average turnaround time, and 6.5 milliseconds will be the average waiting time. If this is the scenario, and if we choose time quantum equals to 3, अगर आप इसी में ही 6 या 7 time quantum में लोगे, then there will be a different Gantt chart, and in that case we have noticed that the average turnaround time is the least or the minimum. So this is what we have to discuss for today's lecture.